Fourth, MOU between SNCF and the Ministry of Indian Railways on technical cooperation in the field of railways, to be exchanged by His Excellency Jean-Yves Le Drian, Minister for Europe and Foreign Affairs, and Shri Piyush Goyal, Minister for Railways and Coal. Fifth, letter of intent for the creation of a permanent Indo-French Railway Forum, to be exchanged by His Excellency Mr. Jean-Yves Le Drian and Shri Piyush Goyal, Minister for Railways. Sixth, agreement for the provision of reciprocal logistic support between the armed forces, to be exchanged by Her Excellency Mrs. Florence Parly, Minister for the Armed Forces of France, and Srimati Nirmala Sitharaman, Minister of Defence. Seventh, memorandum of cooperation for ecological and inclusive transition in the field of environment, to be exchanged by Mrs. Brune Person, Minister of State attached to the Minister for Ecological and Inclusive Transition, and Dr. Mahesh Sharma, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change. Eighth, agreement on cooperation in the field of urban development, to be exchanged by Mrs. Brune Person, Minister of State, and Shri Hardeep Singh Puri, Minister of State for Housing and Urban Affairs. Ninth, agreement on the exchange and reciprocal protection of classified or protected information, to be exchanged by Mr. Philippe Etienne, Diplomatic Advisor to the French President, and Shri Ajit Doval, National Security Advisor. Tenth, implementing arrangement between the Centre National d'Etudes Spéciales and the Indian Space Research Organization for pre-formulation studies of a maritime awareness mission, to be exchanged by Mr. Jean-Yves Le Drian, President CNES, and Dr. K. Sivan, Secretary, Department of Space and Chairman ISRO. Eleventh, Industrial Way Forward Agreement between the Nuclear Power Corporation of India and EDF France, to be exchanged by Mr. Jean-Bernard Levy, CEO EDF, and Dr. Shekhar Basu, Secretary, Department of Atomic Energy. 12th, bilateral arrangement between the Government of India and the Service Hydrographique de la Marine on marine hydrography and cartography, to be exchanged by the Ambassador of France to India, His Excellency Mr. Alexander Ziegler, and Shri Vinay Mohan Kwatra, Indian Ambassador to France. Thirteenth, credit facility agreement between Department of Economic Affairs and AFD France for 100 million euros for the Smart Cities Mission Support Program, to be exchanged by Mr. Remy Reyou, Director of French Development Agency and Ambassador of India to France, Shri Vinay Mohan Kwatra. The final document, 14th, MOU between National Institute of Solar Energy and INES CA France, to be exchanged by Mr. Daniel
Ververde, Administrator, the Commission for Atomic and Alternate Energy of France, and Ambassador of India to France, Shri Vinay Mohan Quatra. Excellencies, this concludes the exchange of agreements ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to you all to this press event. To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Mon ami Monsieur le Président Macron, सम्मान्य शिष्टमंडलों के सदस्यगण, मीडिया फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राष्ट्रपति मैक्रो का और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का भारत में सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति जी कुछ महीने पहले पिछले साल आपने पेरिस में खुले दिल से और गले मिलकर बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे भारत की धरती पर आपका स्वागत करने का मौका मिला। राष्ट्रपति जी, आप और मैं यहाँ साथ साथ खड़े हैं। हम सिर्फ दो सशक्त स्वतंत्र देशों, वो दो विविधतापूर्ण लोकतंत्र के ही नेता नहीं हैं। हम दो समृद्ध और समर्थ विरासतों के उत्तराधिकारी भी हैं। हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भले ही 20 साल पुरानी हो, हमारे देशों और हमारी सभ्यताओं की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप सदियों लंबी है। 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक पंचतंत्र की कहानियों के जरिए, वेद, उपनिषद, महाकाव्यों, श्री रामकृष्ण और श्री अरविंद जैसे महापुरुषों के जरिए फ्रांसीसी विचारकों ने भारत की आत्मा में झोंक करके देखा है। वॉल्टेयर, विक्टर ह्यूगो, रोमन रोला, रेने दोमाल, आंद्रे मालरो जैसे असंख्य युग प्रवर्तकों ने भारत के दर्शन में अपनी विचारधाराओं का पूरक और प्रेरक पाया है। राष्ट्रपति जी, आज हमारी यह मुलाकात सिर्फ दो देशों के नेताओं की मुलाकात ही नहीं, दो समान विचार वाली सभ्यताओं और उनकी समग्र धरोहर का समागम है, संगम है। यह संयोग मात्र नहीं है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की गूंज फ्रांस में ही नहीं, भारत के संविधान में भी दर्ज है। हमारे दोनों देशों के समाज इन मूल्यों की नींव पर खड़े हैं। इन मूल्यों के लिए हमारे वीर सेनानियों ने 2 विश्व युद्धों में अपनी कुर्बानियां दी हैं। फ्रेंड्स, फ्रांस और भारत की एक मंच पर उपस्थिति एक समावेशी, खुले, समृद्ध व शांतिमय विश्व के लिए एक सुनहरा संकेत है। हमारे दोनों देशों की स्वायत्त और स्वतंत्र विदेश नीतियां सिर्फ अपने अपने हित पर ही नहीं, अपने देशवासियों के हित पर ही नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को सहेजने पर भी केंद्रित है। और आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि कोई 2 देश कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो वो है भारत और फ्रांस। राष्ट्रपति जी,
आपके नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी आसान कर दी है। जब 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लॉन्च हुआ था तो पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ हुआ था। कल इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन साझा जिम्मेदारियों के प्रति हमारी कार्यशील जागरूकता का ज्वलंत उदाहरण है। मुझे खुशी है कि यह शुभ कार्य फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ ही हो रहा है। फ्रेंड्स, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और हाई टेक्नोलॉजी में भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय सहयोग का इतिहास बहुत ही लंबा है। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बायपार्टीजन सहमति है। सरकार किसी भी की हो, हमारे संबंधों का गाफ सिर्फ और सिर्फ ऊंचा ही जाता है। आज की हमारी बातचीत में जो निर्णय लिए गए उनका एक परिचय आपको अभी हुए समझौतों में मिल गया है और इसलिए मैं सिर्फ 3 स्पेसिफिक विषयों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। पहला, रक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध बहुत ही गहन है और हम फ्रांस के सबसे विश्वस्त रक्षा साझेदारों में एक मानते हैं। हमारी सेनाओं के सभी अंगों के बीच विचार विमर्श और युद्ध अभ्यासों का नियमित रूप से आयोजन होता है। रक्षा उपकरणों और उत्पादन में हमारे संबंध मजबूत है। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस द्वारा मेक इन इंडिया के कमिटमेंट का हम स्वागत करते हैं। आज हमारी सेनाओं के बीच रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के समझौते को मैं हमारी घनिष्ठ रक्षा सहयोग के इतिहास में एक स्वर्णिम कदम मानता हूं। दूसरा, हम दोनों का मानना है कि भविष्य में विश्व में सुख, शांति और प्रगति और समृद्धि के लिए इंडियन ओशन क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामुद्रिक सुरक्षा या सामुद्रिक संसाधन या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइंग, इन सभी विषयों पर हम अपना सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए आज हम इंडियन ओशन क्षेत्र में अपने सहयोग के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन जारी कर रहे हैं। और तीसरा, हम मानते हैं कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारे पीपल टू पीपल संबंध, विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच। हम चाहते हैं कि हमारे युवा एक दूसरे के देश को जाने, एक दूसरे के देश को देखें, समझें, वहां रहें, वहां काम करें, ताकि हमारे संबंधों के लिए हजारों एम्बेसडर्स तैयार हों। और इसलिए आज हमने 2 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। एक समझौता एक दूसरे की शिक्षा योग्यताओं को मान्यता देने का और दूसरा हमारी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप का है। ये दोनों समझौते हमारे देशवासियों के, हमारे युवाओं के बीच करीबी संबंधों का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों के अन्य कई आयाम है, सभी का उल्लेख करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी। रेलवे, शहरी विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, अंतरिक्ष, यानी जमीन से आसमान तक ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हम साथ मिलकर के काम न कर रहे हों। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम सहयोग और समन्वय के साथ काम करते हैं। अफ्रीकी देशों से
भारत और फ्रांस के मजबूत संबंध रहे हैं। ये हमारे सहयोग का एक और आयाम विकसित करने का मजबूत आधार प्रदान करता है। कल इंटरनेशनल सोलार अलायंस की फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस की सह अध्यक्षता राष्ट्रपति मैक्रो और मैं करेंगे। हमारे साथ कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और मंत्रीगण भी उपस्थित होंगे। प्लेनेट अर्थ के भविष्य की खातिर हम सभी इंटरनेशनल सोलार अलायंस की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति जी, मुझे आशा है कि परसों वाराणसी में आपको भारत की उस प्राचीन और साथ ही चिर नवीन आत्मा का अनुभव होगा जिसकी तरलता ने भारत की सभ्यता को सींचा है और जिसने फ्रांस के अनेक विचारकों, साहित्यकारों और कलाकारों को भी प्रेरित किया है। आने वाले 2 दिनों में राष्ट्रपति मैक्रो और मैं विचारों का आदान प्रदान जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति मैक्रो का, उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो रेमर्सी। Thank you, sir. May I now request the Honorable President of France to deliver his remarks to the media. Namaste. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Monsieur le Premier ministre, chers amis, merci beaucoup pour ces mots, vos engagements et merci pour votre accueil. La visite d'État que nous effectuons avec l'ensemble de ma délégation est un engagement que nous avions pris ensemble au mois de juin dernier, vous l'avez rappelé, lorsque vous avez rendu visite à la France. Et vous venez parfaitement de rappeler la force des liens historiques qui nous unissent. Vous avez rappelé la présence de nombreux écrivains français et l'inspiration qu'ils ont tirée dans votre pays. Je veux dire ici que des générations de traducteurs au XVIIIe et au début du XIXe siècle se sont épuisés à essayer de traduire le Mahabharata, achevant ce travail totalement du sanskrit au français simplement au début du XXe siècle, mais combien tout au long de ces décennies, et ce à partir de la fin du XVIIIe, l'imaginaire indien et les grands mythes ont aussi inspiré la pensée occidentale et en particulier la pensée française, ont inspiré nos lieux et nos auteurs. Et j'en veux une preuve et une anecdote qui est que, m'a-t-on raconté, et il y en a encore la trace au musée Guimet en France, lorsque Georges Clemenceau a essayé de mieux comprendre l'Inde et qu'il s'est rendu dans votre pays, il a été voir plusieurs brahmanes en demandant les secrets et le cœur de la culture. On a commencé à lui raconter quelques mythes, et l'un d'entre eux s'est interrompu en lui disant « Vous devriez demander à Émile Sénard, il connaît ça bien mieux que nous. » Émile Sénard était un grand spécialiste de l'Inde et le premier traducteur du sanskrit en français de la Gita. Ce lien, c'est celui aussi qui a fait que 140 000 Indiens sont venus risquer leur vie pendant la Première Guerre mondiale pour la liberté de la France. C'est ce lien qu'ensemble aussi nous avions consacré au mois de juin dernier. Beaucoup sont inhumés dans une région qui m'est familière, au cimetière de la Chapelette à Péronne, à quelques kilomètres de la ville où je suis moi-même né. Et c'est Apollinaire, dans ses calligrammes, qui parlait d'eux en écrivant « Il regarde avec étonnement les campagnes occidentales, il pense avec mélancolie à ceux dont il se demande s'ils les reverront. » Et la France n'oubliera jamais ce lien et ces vies perdues pour notre liberté. Et c'est en leur honneur, et comme je viens de le proposer au Premier ministre, que l'Inde sera pleinement au cœur des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre prochain, et que nous lancerons à cette occasion
l'initiative du Forum de Paris pour la paix qui aura pour mission de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance mondiale en faisant ce que, je crois, nous faisons le mieux ensemble, c'est-à-dire partager une même lecture du monde et un même cadre stratégique. La confiance entre nous nous protège parce que nos intérêts sont alignés. Ils sont alignés d'abord contre le terrorisme, c'est l'axe structurant de la nouvelle dynamique que nous donnons à notre partenariat stratégique. Face à la menace d'aujourd'hui, celle du terrorisme islamiste, et concrètement, nous avons décidé de consolider des échanges constants et très opérationnels, de faire davantage ensemble sur la lutte contre la radicalisation sur les réseaux sociaux et sur le financement du terrorisme. Cette confiance, c'est celle que nous voulons aussi avoir pour défendre nos intérêts de souveraineté. Et après 20 ans de partenariat stratégique, nous ouvrons aujourd'hui ensemble une nouvelle ère qui est un partenariat stratégique renforcé avec des alliances inédites sur le plan stratégique et opérationnel. Et une conviction profonde, c'est qu'une partie forte de notre sécurité, de notre avenir et de la stabilité du monde se joue dans la stabilité de l'océan Indien. Et je veux qu'ensemble nous puissions construire, la France étant une puissance de cet océan et plus largement de cet espace Indo-Pacifique à travers sa présence aussi bien dans les deux océans que je viens d'évoquer. Ce que nous avons décidé ensemble de faire, c'est d'acter une stratégie de coopération, d'échange d'informations, de présence militaire, navale, de renforcement de nos liens, d'escale dans nos bases respectives, de partenariat à travers nos agences spatiales pour mener une action conjointe de surveillance maritime et de nous assurer de ce que je qualifierais dans la foulée du Premier ministre australien, la liberté de notre souveraineté. L'océan Indien, comme l'océan Pacifique, ne peuvent devenir des lieux d'hégémonie. The Pacific or the Indian Ocean cannot be places for hegemonic powers. We are building, therefore, a strategic partnership in this respect. This is also the purpose of our defence cooperation. It was born a while ago and was also tested in difficult times, but beyond political alternative both in France and in India, this cooperation in the defence field now has a new signification. Let me remind everyone that it is a French company that supported an Indian company for building the Scorpion submarines in Mumbai. The first submarine is now in service and will quickly and very soon join a drill organized both by France and India. This is part of the Make in India project. Same for fighter jets. India has made a sovereign decision in this respect, and we are monitoring the progress achieved in the field. This program, which we very much want to continue, it is a long-term project which is mutually beneficial, and I personally consider that at the heart of this defence strategic partnership is crucial because it's very much at the heart of what is being done around the world and the new face of the world. There is therefore a trust compact between the two of us, between ourselves, and there is also a peace compact. The second pillar of what we're doing is everything we're doing for justice. A couple of weeks ago in Davos, Excellency, you quoted Mahatma Gandhi, and I paid tribute to him this morning, and I would like to quote what he said. There is enough nature for need, but not for greed. I do not know whether one can stop greediness when it comes to globalization, but we can make a joint commitment to find some concrete answers to our joint vision of climate, which is a joint asset. It is in this context that, in accordance with the Paris Agreement, we decided to fully implement our commitments in terms of solar energy. This is what we will be, therefore, implementing tomorrow on the occasion of the founding summit of the International Solar Alliance. A lot of work has been done on both sides in order to gather as many partners, states as possible, as many
funders as well. And what was initially an Indian idea turned into an initiative, and this one tomorrow will be a reality, a fact that was made possible. So Prime Minister, Excellency, thank you so much for hosting us, for hosting this meeting. On this occasion, we will agree a roadmap on 3 points. First of all, it is about identifying projects, access to financing, and access to technology. We'll talk more about it tomorrow, but I think it is a major point of time, a major time for India, for our partnership, and for the world. This priority, which we are supporting at the international level, is also being implemented now at bilateral level through our cooperation. I did not comment on the 50 or so contracts which are being signed, but there is one thing in common, is that many of these agreements very much allow us to fight climate disruption in the context of our bilateral contacts. Transport now, there is the semi-high-speed Delhi-Chandigarh railway. There is also electric mobility. We have same interests. We are developing also infrastructure, urban infrastructure in Chandigarh, Nagpur and Pondicherry. And when it comes to renewables, the French Development Agency commitment portfolio is in 1/3 about renewable energy. We are investing in the largest solar plant in Uttar Pradesh, which is at the heart of the programs you've initiated. We together are investing in the future of India. And the framework agreement is signed today also contributes to reducing carbon emissions in the electric and energy mix, which is very much part of that mission. It is also the same goal that we share in the context of our space partnership and for the benefit of climate. This bilateral relation, of course, is also economic, as shown by many contracts being signed. We will later on today be meeting CEOs who come regularly, and I would like to thank them for their commitment, their very lively discussions and work. The number, if I may quote a number of areas, technology or services. But we shall do more, particularly in the agri-food business or for SMEs, and I will say more about it later on today. This is also one of the reasons why we are both very much attached to the balance of the international trade. We share the same willingness to prevent any trade war and to protect existing balances. Of course, we will defend our interests within the international fora and in accordance with the rules of international trade and prevent any negative impact on our economies. Now, the last element of our bilateral cooperation, it is about sharing. This history which is feeding our relationship is also about human bonds, because on a daily basis, these men and women, these communities, and our civilizations are so meaningful and open. And we are aiming at strengthening this bond. This is the reason why I very much would like to double the number of Indian students in France. Today we're signing an agreement on recognizing qualifications as well as an agreement on mobility. And we will be holding the Knowledge Summit, the first Knowledge Summit between our two countries, embodied by some 500 cooperation agreements. And here again it is about investing in the future of India, its human capital, which is also brings us so much. So we are also strengthening our cooperation in the field. We're also strengthening our cooperation in the field of tourism, heritage, culture. All of this will be decided, and India will be the guest of honor of the book fair in Paris in 2020. Please allow me to say as well that the purpose of this visit is also to
make India our first strategic partner in the region. And I would like France to be your first strategic partner in Europe and more generally in the Western world. For all the reasons I mentioned, because we share the same defense and strategic interests, because we have the same vision of the world, because we have the same vision of these common goods such as climate, and because we also have this community of men and women which so much contributed to that. Like I said, beyond our discussions today, or in the margin of our discussions, I will have a meeting with some young Indians this afternoon, a very lively discussion on these ideas. And tomorrow we will launch the International Solar Alliance together. I will visit the Taj Mahal, and we will be traveling to Benares on the day after tomorrow together, which gives me great pleasure, and will very much go to the roots of Indian culture, like you said, in order to inaugurate this major solar plant. And also we will continue to develop these permanent bonds that we have, and make sure that these historical bonds are turned into a future relationship thanks to this strategic partnership. Of course, I will come back to India, but dear friend, Mr. Prime Minister, please let me tell you that you are the standing invitee of France. Thank you so much. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining.